Hello students, today we are going to study differential equations and the different methods to solve differential equations. Differential equations एक बहुत ही important topic है और हम इसमें उसके concept, definition से लेके examples, we are going to study everything, so watch the video till the end. First of all, what is a differential equation? Differential equation means any equation which involves derivatives, यानी कोई भी equation जिसमें derivatives है dependent variable का with respect to the independent variable like dy by dx, d square y by dx square. That is a differential equation. Next thing is order and degree. इसमें बहुत confusion होता है कभी-कभी order and degree. ऑर्डर यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दैट इज द ऑर्डर 2 एंड डिग्री क्या है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर है दैट इज द डिग्री वी विल सी एग्जांपल्स फॉर दैट ऑल्सो एक चीज ध्यान में रखना कि नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें अगर y आता है तो उसकी डिग्री हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे जो हमने ऑर्डर और डिग्री की बात की है ये एग्जांपल्स अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d4y बाई डी एक्स रेज टू 4 है यानी कि फोर्थ ऑर्डर तो ऑर्डर 4 है और वो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका क्या पावर है 3 तो डिग्री 3 है उस तरह से होगा जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जैसे मैंने कहा था कि लॉग एक्सपोनेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें भी y का टर्म आता है यहाँ पर जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें स्टडी करना है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस उसकी डिग्री होती है 1 नाउ फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू टेक केयर डिपेंडेंट वेरिएबल जो y और उसके डेरिवेटिव्स है सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए 1 से ज्यादा नहीं सेकेंड थिंग इज y एंड dy by dx उसका प्रोडक्ट दैट इज नॉट अलाउड दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ y and its derivative is not allowed otherwise it will not remain linear and third thing is the coefficient functions must be function of the independent variable x यानी कि the standard form is dy by dx plus p of x into y is equal to sum q of x ये जो p of x and q of x है वो x के functions है तो यहाँ मैंने examples दिए हैं linear differential equations के very important types of linear differential equation we saw what are linear differential equations अब दो टाइप के होते हैं फर्स्ट थिंग इज जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx plus p of x into y is equal to q of x अगर q of x 0 है दैट मीन्स हर एक टर्म में y या उसका डेरिवेटिव है कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है या कोई x का टर्म नहीं है इन दैट केस इट इज कॉल्ड होमोजीनियस जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं नॉन होमोजीनियस मीन्स जो QX है वो 0 नहीं है तो जो राइट हैंड साइड है वो आइदर कांस्टेंट है जैसे 6 यहाँ पर है या x का कोई फंक्शन है जैसे e raised to 2x so don't confuse there are two types homogeneous and non homogeneous differential equation अब जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन remember students you will always be asked to find a general and then the particular solution for a given differential equation now what is the difference the differential equation's general solution is a family of all the possible solutions जो जनरल सोल्यूशन है ना उसमें एक कांस्टेंट c आता है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है फिर अगर आप उसको कोई कंडीशन डालोगे देन वी विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c एंड द जनरल सोल्यूशन विल टर्न इनटू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऐसा क्यों होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल यू नो दैट डिफरेंशिएशन सपोज y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर तो बेसिकली आपका ओरिजिनल फंक्शन y क्या है एक्स क्यूब तो ही आपका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा पर जो ओरिजिनल फंक्शन है वो एक्स क्यूब प्लस 5 है तो भी डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा एक्स क्यूब प्लस 10 है तो भी डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा तो जो कांस्टेंट है ओरिजिनल फंक्शन में दैट कैन टेक एनी वैल्यू सो इन शॉर्ट व्हाट डू यू मीन बाय दिस when the arbitrary constant of the general solution takes some unique value then that solution will become a
पर्टिकुलर सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन है उसमें गिवन कंडीशंस के हिसाब से जो भी सी की वैल्यू मिलती है, when we put that value our general solution will become a particular solution. Now we come to the most important thing, how to solve a linear differential equation. We are going to discuss three main methods. So watch the video till the end. ये तीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जांपल आता है जनरल कंफ्यूजन इज विच मेथड टू यूज. तो सबसे पहला मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. If your equation is of the form या can be expressed in the form of h of y into dy is equal to g of x into dx, यानी कि हम लोग x और y वेरिएबल अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, then we can use this method. सेकेंड मेथड इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y डैश इज इक्वल टू p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, डायरेक्टली अगर इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है और अगर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं यूज कर सकते हो, देन दिस इज अ गुड मेथड, मोस्टली यूज मेथड विच इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए काम आता है, जिसमें आप एक y बाय एक्स के फॉर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हो और आप एक नया वेरिएबल लेते हो. यू सब्स्टिट्यूट y अपॉन x एज सम न्यू वेरिएबल v एंड देन you find the solution. So we are going to discuss examples for all the three methods. First example, you have to find the general solution first, obviously, and then the particular solution for the given differential equation with the condition y is equal to 0 when x is equal to 2. यानी कि ये जो differential equation दिया है उसमें आपको पहले जनरल और उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर द गिवन कंडीशन. अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग इसको वन साइड y वेरिएबल्स अदर साइड x वेरिएबल्स के फॉर्म में यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो when we simplify this equation we get integral dy is equal to integral dx upon x into x square minus 1. अब हम लोग टर्न बाय टर्न दोनों इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली लेफ्ट साइड इज वेरी सिंपल, राइट साइड इंटीग्रल विल ट्राई टू solve the integral on the right hand side. इसके लिए हम लोग partial fraction method use करेंगे. I'll not discuss this in detail. You can watch the integration video in which I have explained this method in detail. इसमें आप split कर दोगे terms, तो you can use the partial fraction method and on the basis of that you will be getting this a, b, c values. Let's see what the equation will become now. तो partial fraction method से हम लोग ने जो सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन, उस हिसाब से dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ dx अपॉन x प्लस हाफ इंटू dx अपॉन x माइनस 1 प्लस हाफ इंटू dx अपॉन x प्लस 1. सो नाउ इट हैज बिकम वेरी सिंपल. 1 अपॉन x टाइप का इंटीग्रल क्या होता है? log mod x. So just use that concept, so you will get this. Again you know that log of x into y is log x plus log y. So using that concept, when you simplify, you will get half into log of mod of x square minus 1 upon x square plus c. And right hand side, obviously integral 1 dy is y. So now first of all, you have obtained a general solution which is y is equal to half into log of x square mod of x square minus 1 upon x square plus c. Now we want the particular solution, तो उसमें आपको given condition रखनी है x2 and y0. On putting those values, you get c is equal to minus half log 3 by 4. So now again put this value back in your general solution. So we'll get the particular solution. So the answer is y is equal to half log mod of x square minus 1 upon x square minus the value of c, which is half log 3 by 4. Now the next method would be the substitution method for solving a homogeneous differential equation. I have written the steps for this. We will understand with the help of an example. So let's see how to use the substitution method for the homogeneous equation. यहाँ पर जो equation दिया है वो है 2xy plus y square minus 2xy dy by dx is equal to 0. So if you compare this, you know now that this is a homogeneous equation. Right hand side is equal to 0. So now first of all try to simplify this equation. तो आप simplify करोगे तो आपको मिलेगा dy by dx is equal to 2xy plus y square upon 2x square. Now looking at this, you can know that now if you divide by x square, then you will be able to get in the y by x form.
तो dividing by x square, obviously multiplying and dividing by x square, numerator denominator. So you'll be getting dy by dx is equal to y upon x plus half into y square by x square. तो ये y upon x के फॉर्म में हमें मिल गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? y upon x को हम v सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore y is equal to v into x. So differentiate both sides. dy by dx is equal to multiplication rule v into derivative of x is 1 plus x into dv by dx. तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम y by x को v रखेंगे. तो क्या मिलेगा? dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. Now x into dv by dx will be equal to, when you simplify this you will be getting v square by 2. तो अब क्या करना है? अब दोनों x और v वेरिएबल है, उसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले जाएंगे. तो इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, यू विल बी गेटिंग integral of dx upon x is equal to 2 into integral of dv upon v square. So when you simplify this, you will be getting log mod x is equal to 2 into v raised to minus 1 upon minus 1 plus c. तो हमारा जनरल सोल्यूशन हमें क्या मिला? log mod x is equal to minus 2 upon v plus c. This is our general solution. तो जो जनरल सोल्यूशन मिला है उसमें वेरिएबल v है, तो हमें फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में रीसब्स्टिट्यूट करना है एंड राइट v इज इक्वल टू y अपॉन x. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल बी गेटिंग log mod x इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y प्लस c. अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और अपने से मिला c इज इक्वल टू 1. सो नाउ व्हाट डू यू गेट? log mod x is equal to minus 2x upon y plus 1. Make y as the subject of the formula. So we will be getting the particular solution for the given case as y is equal to 2x upon 1 minus log mod x. The next method is called the integrating factor method. Students, this method, many examples are asked. ये बहुत ही important method है. Now, what are the main steps of this method? जनरली आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dy by dx plus p means p is a function of x, q is a function of x, so dy by dx plus p into y is equal to q. But sometimes it is easy to convert in the form of dx by dy plus p into x is equal to q. So that is also perfectly okay. The main step is you first of all find something called integrating factor. What is the integrating factor formula? E raised to integral p dx. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है dy by dx plus y by x is equal to 3 into x. तो यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो what is your p function? p of x is 1 upon x and q of x, that function is 3 by 3 into x. So इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे. Solve this given differential equation dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. Now over here when you compare with our standard form, सबसे first step compare with the standard form. So you will get your p as 2 into tan x and q as sin x. So this is the first step. Second step and the most important step in which you can make mistakes, so take care, integrating factor is e raised to integral p dx. तो यहाँ पर जो p फंक्शन है वो क्या है? वो है 2 into tan x. तो e raised to integral 2 tan x dx. Now integral tan, you know it is minus log या ln mod cos x. So over here when you simplify you will get e raised to minus 2 log of mod cos x. Obviously minus 2 when for the log function it goes in the power, so you will be getting e raised to minus log of cos x square. But e and log, they are inverse type of function. So what will be this simplified into? This will just be cos raised to minus 2x. So cos raised to minus 2x or 1 upon cos square x. This will be your integrating factor. Now we have got the integrating factor. The third step is, remember this formula, y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c. तो if क्या है यहाँ पर 1 upon cos square x or that is sec square x and q is sin x. Now put in the formula. So you will be getting y into sec square x is equal to integral sec x tan x dx. But what is that? That is
Integral sec x tan x is sec x. Now just divide both the sides by sec square x. So when you simplify, you will be getting y is equal to cos x plus c into cos square x. Now this is the general solution. Y is equal to cos x plus cos square x into c is the general solution. इसमें हम जो given condition से y is equal to 0 when x equal to pi by 3 रखेंगे तो c मिलेगा -2. So the particular solution is y is equal to cos x minus 2 cos square x. Next example, it's a special type of example. X into dx plus y dy is equal to a square into x dy minus y dx upon x square plus y square. Now these are some special type of examples. इसमें आपको example देखकर पता चल जाना चाहिए कि आपको किस तरह से इसको solve करना है. जैसे left hand side है, वो किसका differential है? यानी अगर मैं एक फंक्शन लेती हूँ हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करती हूँ तो क्या मिलेगा? When you find the derivative of half into x square plus y square with respect to x, you know you will be getting half into 2x plus 2y into dy by dx. Simplified, it will be x dx plus y dy. So that is our left hand side actually. And right hand side, now tan inverse of y by x. When you find the derivative of this function with respect to x, let us find it out and check. It will be tan inverse derivative 1 upon 1 plus y upon x whole square. Correct? Into derivative of y upon x. Now what is derivative of y upon x? Use the quotient rule. So it will be x dy by dx minus y into 1 upon x square. So actually when you find the derivative of tan inverse y by x, this will be equal to x dy minus y dx upon x square plus y square, and that is nothing but on our right hand side. So now our given equation can be written as derivative of half into x square plus y square is equal to a square into derivative of tan inverse y by x. Now obviously when you integrate the derivative, you will be getting the original function. So you will be getting half into x square plus y square is equal to a square into tan inverse y by x plus c. So this is how you get the general solution for these type of examples. Now, the previous example which we had seen, similar type of cases can occur. So I have given a formula list over here. So if these type of examples come directly without doing any other calculation, you can write the answer like we had done in the previous example. Your left hand side and your right hand side must be the derivative of some specific function. So please note down these formula. The concept for differential equations is clear. For more examples asked in JEE and for other exams, class 9, 10, 11, 12, please subscribe to the channel.